Alright, welcome back, guys. Now we are discussing median of two sorted arrays, right? So we will take the example from the problem itself, right? And we will solve it out. Okay. Okay. It's not a very good example. Let me take example with from myself only. So let's say that example is this here, right? Okay. So let's take this example. Let's say we have one, two, two, three, not three, but five, right? Like this, and eight. And this is our array one, right? And array two here is this. Let's say two, three. Okay, let's do one thing. Delete this two from here, right? Two, three, 6, 7. It's a good because it's even, so very good, right? Now we need to find the median, right, of this array. How can we do that? So one thing is which is order of n approach. Let's order of n approach is add both the numbers, right? This is n1 elements, these are n2 elements, n1 plus n2, right? So it is 4 plus 4, 4, but it is even, so which element we need to take? Fourth element, and I think fifth element, right? This element and first element from this, like this, right? So we can do like fourth and fifth element by comparing this, there, here. So this order of order of n is very simple to find the median, but we need to optimize it, right? In the order of log n or order of square root of n, right? But because it is sorted, right, what we can do, we can think about binary search here, right? Because of it is sorted, so we our mind should go to binary search, right? So let me show you guys, okay? Let me show you one thing which is very important also, okay? Let's say let's sort it out, right? 1, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8. It is like this, right? Now how many elements, right? How many elements we want on the left side? Let's say median is here, right? Equal elements on the right side, equal elements on the left side, right? So let's say median is here. So this array is sorted, this array is also sorted, right? This part. So this is the correct
depiction of sorted, right? We can take this element and this element and uh, find the median, right? By now, how many elements in this, right, in this part of array are from, we just need to find the median, right? We don't need to sort this, like, okay, left part should be sorted or right part must be sorted. It is not a requirement. We just need to find median. We can do that by just sorting, like putting the sorted elements in this array, right? So we will focus on the left side of array only, right? So because these all are sorted, right? So let me write this in different way and you will be able to understand that much better. 1, 2, 5 and 8, right? And it is 2, 3, 6 and 7. These are two arrays, right? This is A1, this is A2. So in this left array, right, how many elements we are taking from this, because this is the only this is only correct solution, right? You can just solve this, but it doesn't matter because it's 2 2. Here order doesn't matter for 2 only, right? So this is only if you put 3 here and 2 here, then it will be wrong solution, right? So this is only correct possible solution, right? So we have this part, left part, and we have this right part, and we are just focusing on left part, that how many elements in left part we should take from array 1 and how many elements we should take from array 2, right? Let's say we are taking from array 1 only one element, this. Then rest of element we have to take in the left part will be should be 3, because left part is consists of 4 elements. So this. So is this correct? Will this make it correct, right? 1, 2, 3, 6. Is it correct way to do it? It is not. So we have to take more than one element from array 1, right? If we take 2 elements from array 1, so how many elements we need to take from array 2? It will be 1, 2, 2, 3. 2 elements from array 2 and 2 elements from array 1, and which is correct also. If we take 3 elements from array 1, so it will be 1, 2, 5, and we only need from array 2 is 2, so it is also wrong. The only way we can do is we need to take only 2 elements from array 1 and 2 elements from array 2, right? This is the way. So which 2 element, okay, which 2 element we need from array 1 and array 2? This is very important, and which will be the correct, right? So let's say, and this is very important, guys, we have so should I draw a one line, right? So we took 2 elements from here and 2 elements from here, right? Now can you see one pattern here? Okay, this element in the left part of array 1, right? The maximum element in left part of array 1 is less than this, the minimum element of right part of array 2. And same for this, maximum in array 2 is
this, it is less than, right? But if we took like this 1, 2, 5, 8 and 2 here only, 3, 6, 7. So this condition is getting false because this left part is greater than this, right? Let me write it in a very good way for you, right? 2, 3, 6, 7, right? As you can see, this 5 is like greater than. In this case, this is failing, right? This is failing because we need to. We need it is 1, 2, 5, 2, 3. Because one greater element we are putting in the left side, right? In the left side, we are in this sorted left side, but we have greater element in the right side, left, right? It must not be possible, right? So what we have to do, we have to take this to here, right? Like this. Or this is one more thing. Let's say only take 1 from here, right? 1, 2, 5, 8, and 2, 3, 6, 7. This is also, now this is greater. Now this is greater than 2. So this must be like this. So this one condition, let's say we have this L1 and we have here R1, here L2, we have R2. So what condition must be true when we are finding L1 and this median? So L1 must be less than or is equal to R2 and L2 must be less than or equal to R1. Okay, this must satisfy. And what will be the median for us? Median, right? So as you can see, median was this 3 and plus 5 by 2, right? So what we can find median? Maximum of L1 plus L2, right? So median would be max of L1 plus L2 and 5, right? Plus minimum of R1 plus R2 by 2, right? This will be our median. Okay. So guys, what we can do, we just have to place L1 and L2 and R1 and R2 at the right place, right? Okay. Now, where should we put our L1 and R1, right? Where should we put? So we just need to find how many elements we are taking from array 1, right? If we are taking 2 elements from 1 element from array 1, then we have to take 4 minus 1 is equal to 3 elements from array 2. That's because we need 4 elements in the left part of this sorted array, right? And if we are taking 2 elements from array 1, then we have to take 4 minus 2 is equal to 2 elements from array 2, right? So we just need to find this array 1, or vice versa we can do for array 2, then we will automatically find for array 1, right? So we need to find that. Okay. So what we can do here, we can put binary search, right? How we can put binary search? Because we have this 1, 2, 5, 8, right? We have 4 elements. From these 4 elements, we can take like 4 by 2 is 2 elements, right? If let's say it was like let's say 2. Let's say this formula gives us low plus high by 2 gives us 3, right? It gives us 3 if we are taking 3 elements from array 1, right? So it will be 1, 2, 5. Let me show it to 1, 2, 5, 8 and 2, 3, 6, 7, right? 2, 3, 6, 7. If we are taking from array 1, right? Here this is L1, this is L2, R1 and it is R2, right? Now you see L1 is greater than R2,
this condition is not satisfying here, right? This condition. So what we have to do, L1 we are finding R2. What we will do after that, we will put high, we have to go left side, right? We have to go left from here. So high is equal to mid minus 1, right? Let's say we found this only one element from this, right? So if it was 1 2 5 8 and it was 2 3 6 and 7, now L2 is greater than R1, right? Now we have to go right. So what we will do, low is equal to mid plus 1. If these conditions fail, right? But sometimes what we can have, we can get there some will be conditions like all the elements are from right on, the array 2 only, right? So median for this is 0 elements, right? 0 elements 1 2 5 8 and all elements 2 3 6 7 are from here, right? So if L1 is here, right, and R2 is here, let's say, or let's say R2 is not here, like only 3 elements, R2 is here, let's say, in some example. So if L1 is going like 0, right? So this should be like, this should be making this condition true, right? So we can put it at int min, right? Int min, right? Okay, and if it is like this, so it's also we can put it as int max here, R2. So like that, right? These will be some conditions we have to follow. It's very important, and let's try to code it now, right? I think when we code it, you will be able to understand it more. So we have these two sorted arrays here, right? Okay. So one more thing, guys, is that if like which, so the thing is, like we are finding median by binary search like low plus I, right, on array 1. But what if array 1 is very large and array 2 is very small, right? So if to optimize it more, let's say array 1 size is n1 is 10 to power 5, let's say, and n2 is only 10, right? So log 10 is very small than log 10 to power 5, right? So what we will do, we will make took log of on L2, and then this will automatically be found like how many elements we are taking from array 1 or array 2, right? So here let's say int n1 is equal to nums1 dot size here, right? And int n2 is nums2 dot size, right? Now if nums1 is smaller, right, then nums2, then it's fine. But if n2 is smaller than n1, then what we should do, we should return, right, return find median sorted arrays, right? We will switch it, nums2 will be here and nums1 will be here, just like that. That's not a very okay. Now one more thing, like how many elements we should take from take in the left side, right? So 4 was there, right? So how many elements? So
n1 plus n2 plus, right, by 2. What is the formula here? 4 plus 4 by 2 is equal to 8 by 2 is 4. 4 elements on left side. What if it is odd? Let's understand odd also. Let's say it was 1, 3, 5, 8, 2, 6, 7, 9, and this was 2 also, right? Then how many elements we want from like this? So 1, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. So this will be the median, right? So how many elements we want on the left part? Should we partition here or should we partition here? It's very important. If we are partitioning here, this is the median. If we are partitioning here, this is the median. So this is 9. N1 is what? 1, 2, 3, 5 plus 4 by 2 is 9, which is giving us 4 is integer. But if we add it to 1 here, then it will give 5. So if we are taking 5 elements from here, right? So in this, then we will have 4 elements from this side, 1 element from this side, and the median will be, what will be the median? Median will be max of L1 comma L2, whatever the maximum, it will be our median. In the odd case, it's very simple. If we are taking this formula, so we will go with this formula only, right? If it is even, it is also like 4 plus 4 plus 1 by 2 is 9 by 2 is 4 only. So it's work for odd and even both, right here. Right, so let's do it. Alright. What we can do here. Okay, so low will be high, low and high will be there, right? So it's very simple. Int low is equal to 0 and high is equal to n1 minus 1, right? It's very important, and we will have our while loop also, right? While low is less than equal to high in this, and int mid will be what it is? Int mid is low plus high by 2, right? Okay. One thing, and one more thing, left part, right? We have to find the left part also. There should be condition, right? There should be condition like we have found the mid, but how many elements we are taking from the left and plus right should be, must be so left part, right? So let me count it. Int left part is equal to n1 plus n2 plus 1 by 2, right? It's very important. Then this left part must be like this. Now median, right? Mid. If mid, whatever the value of mid is, right, is less than or is equal to this left part value, right?
That's when we can say that it's valid mid, right? Otherwise we are exceeding the mid, right? So if mid is less than left, less than or equal to, let's say, left value, then we can go inside it like this, right? Okay. And one more thing, is it correct? I think, I don't know, because if I am putting everything in this, then how will I modify, like update low and high in okay, so we are not taking this condition right now, we will look at it okay, after. Now one thing is, this mid must be like this, is a, let's say, int L1 equal to int min for now, right, default values, and L2 is equal to int min, and R1 is int max, right, and int R2 will be int max, like this. Now we can update the values, right, with the mid, right? Okay, so it will be like, if mid minus 1 greater than or equal to 0, right, then L will be L1 equal to mid minus 1, right? Okay, right. And is it same for L2 also, right? Is it like what would be the L2 for? L2 value, right. So for L2 what we have condition is, if the mid elements we are taking from mid number of elements, right? Okay. Whatever the number we are taking, right? Okay, so if this mid, so if left minus mid, right, minus 1 is greater than or equal to 0, this is for L2, right? L2 is equal to mid minus 1, or it is like this, left minus mid minus 1, right? I think it is, I am doing it right? This is for this, okay. And next thing is, if mid plus 1 is less than n1, right? Because it must be in the this part, right? Mid plus 1, then R1 is equal to mid plus 1, and if left minus mid plus 1, right? If left, no, it's not left.
Mm, if it's not left, yeah, it's like left minus, I think, mid plus 1 is less than n2, right? Then r2 is equal to left minus mid plus 1. I think it is right here. Now, yeah, this is conditions, right? These conditions are like that. Now I can compare things, right? So, if whatever the L1 is, right, A1 of L1, right, is less than A2 of okay, so what I can do is, this is L2, right? So L1, so it is nums1, I have to put it inside like this, right? Because I am taking the value, just value, right? It will be nums2 like this and like this, and here also nums1. Okay, here also nums2. Right, now I can check, okay, if L1 is less than R2 and L2 is less than R1, it's the median for us, right? So if it's even, right, if n1 plus n2 modulo 2 is equal to 1, then in this case we will return max of L1 comma L2, right? Else we will return max of L1 comma L2 plus min of R1 comma R2, right, divided by 2. That's for even case. If it is not this, else if L1 is greater than R2, right? If it is like this, then we have to take it left side, right? Then mid is equal to no, I is equal to mid minus 1, right? Or else would be low is equal to mid plus 1. Else
Yeah, I think it is the same thing. Okay. At the end, what we are returning then? Is it the same right answer? I don't know. Let me see the correct code also, guys, because we may have the some inconsistencies in our code. Let's go to driver and look at the final code for one time. Right. Okay. Case you have. I have a lot of energy still now. Okay, so this is the same thing. Median. Okay. Low, high, just n1. Okay. And left it found n1 plus n2 by 2. Okay. N is equal to n1 plus n2. Okay. Mid is low plus high by 2. Mid 2 is also left minus mid 1. Right. R1 R2 is there. If mid 1 is less than n1, then R1 is mid 1. If mid 2 is this less than n2, then R2 is this. And if mid 1 is less than minus 1 is greater than 0, L1 is this, and L2 is also this. Else return in 0. Okay, return 0 in this case. Okay. Oh, it's finding double here. Okay, what is the return type in our case? Double. Okay, so we can typecast it here, right? Like this, double, and like this. Okay, so one thing he did is very nice, which finding the mid 1 and mid 2 all the way, right? Okay, one more thing he found is whatever we can do it only, and one is center and n equal to n1 plus n2, right? It's very nice. And what he did is high is n1, like not n minus 1, it's just n1. Okay. Low is less than equal to high, and mid is mid 2 he found, like left minus mid 1. Okay, mid 2 is less than h2. So for our this condition, like left minus mid plus 1, we are not we should not find. So mid, like left minus mid 1, right? So R2 for R2, it's not like this only, it's only this. And yeah, left minus mid 2 minus 1 is greater. Mid 2 minus 1 is L2 is mid 2 minus 1. Mid 2 minus 1. Okay, you just mid 2, right, in R2 case. In R1 case, it is mid 1 only, so not mid plus 1. Okay, if mid 1 only, so it's not mid plus 1, it's just mid. And it's case of R1, right? What is L1? Mid minus 1. Mid minus 1 should be greater than equal to 0. L1 is mid minus 1. Correct. What is L2? If left minus mid 2 minus 1, mid 2 minus 1 is greater than equal to 0.
Right. Mid to minus 1. Correct. It's party if L1 double and n is there, makes of L1 and 2. Min of R1 R2 by 2.0. Okay. Right. Okay. Let me see it. If L1 is else if then R2 high is equal to mid minus 1, else low is equal to mid plus 1, and after that what? Where is your turn 0? Right. I think it should work, right? Yeah. It's working, guys. Wrong answer. For something. Output text. What is the okay, so we should not do this double, only L1 comma L2 we can do. Yeah, I think this is one more thing. Less is equal to we have to put, right? And I think it should work now, right? Yeah, accept. बेल का सिस्टम होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं मेरे एक क्वेश्चन देगा था उसका सॉल्यूशन कैसे चल रहा है डीएसएल कर लेता हूँ दो क्वेश्चन डेली सुबह इस टाइम मेडिसिन में कितने एक टोटल टोटल कितने हो रहे हैं डेली नहीं कमी हुई यार जितनी हुई थी उतनी हुई पर अच्छा खासा कर लिया होगा हाँ ठीक ठाक कर दिया थोड़ा सा ये लगातार करता रहूँगा दो तीन क्वेश्चन डेली हाँ तो बन जाना चाहिए था बढ़िया है पर अगले सेमेस्टर को मजे मस्ती क्या मर्जी का प्लेसमेंट लग जाए तो क्या करेगा फिर फाड़ दूंगा कॉलेज में यार पार्लियामेंट हैं पार्लियामेंट अरे तो फिर कैसे पढ़ेगा क्या करेगा कुछ नहीं कर रहा है यार बता तू क्या करना है ऐसे ही आया हूँ एलएमए में क्या हुआ एलएमए में प्रोजेक्ट बनाना है मिनी प्रोजेक्ट हाँ। वही है दो लैंग्वेज ट्रेन मॉडल करना है हाँ पर मिनी प्रोजेक्ट मेजर वो इसी में मेजर का भी इस बार 3 से 4 लोगों की टीम है ना मेजर में हाँ ठीक है तो मेरे को द्विवेदी बोल रहा था मुझे बंद कर लीजिए तो 4 की बनानी तो द्विवेदी सौरभ ना थे 3 की बनानी तो तुम्हें द्विवेदी का ठीक है तो हाँ मिनी प्रोजेक्ट वही है उसको थोड़ा सीखना शुरू कर दें और इसे कर देंगे क्योंकि वो जरूरी सीखना जरूरी है बना तो कुछ बना पड़ा सीखना नहीं कल जाता मैंने ये देखा जो उन्होंने टीएस ने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा एक स्लाइड भेजी फोन बदल दिया क्या तुमने नहीं बोलकर तेरे फोन भी खोला है नेटवर्क भी बंद आ रहा है
फिर कमरे में ये चीज जरूर देखी है मैंने, पता है, एक साइड बैठो तो नेटवर्क आता है, दूसरे साइड उतना अच्छा नहीं आता है। अच्छा। हाँ, ये रहे एम सब डिस्कोर्सेस, स्विट्जरलैंड में मॉडल एजेंट्स पे, हाँ यही वाला तो क्या है? क्या है ये? वो पहले तो उन्होंने 7 बजे ट्यूटोरियल रखेंगे मंडे को, सही है बात है। वो बच्चे बोल रहे थे नहीं वेडनेसडे को रख लो, सैटरडे को रख लो, वेडनेसडे छोड़िए एक तो खाली दिन मिलता ये है। slide खोल। ये स्लाइड क्या है इसमें? खोल तो है क्या इसमें? 445 KB की है बस, 400 मूडल अभी चालू नहीं हुआ है तो उन्होंने यहाँ भेजी है। कल वाली स्लाइड है ये तो? हाँ तो मैं कल थोड़ी था, मुझे थोड़ी पता है। हाँ तो देख लो वो स्लाइड में मतलब कॉम्प्लीकेशन ये प्रोजेक्ट इंडिविजुअल 25% है। ठीक है, समझ रहा है तू? इसमें क्या बनाना है इंडिविजुअल में? मिनी है क्या ये? हाँ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मतलब मिनी प्रोजेक्ट ना? हाँ मैनी प्रोजेक्ट इंडिविजुअल। ठीक है, ये लिखा है इसमें 3 माइलस्टोन्स, ठीक है, प्रेजेंटेशन क्लियर बाय को क्लियर इवैल्यूएशन, जो भी तू किया है मॉडल इम्प्लीमेंट करना है। 2 लैंग्वेज है, इंग्लिश हटा दी इसमें सब कुछ। ठीक है, फिजिकल इंग्लिश, 2 इंडियन लैंग्वेज है, एक मेजर लैंग्वेज जो तुमको बोलनी लिखनी आती है वो हिंदी हो जाएगी अपनी। ठीक है, एक माइनर लैंग्वेज जो रिसोर्स कम है, मतलब उसके रिसोर्स कम अवेलेबल है, संस्कृत उठा लूँगा। जो भी उठाना है। ठीक है, तो सीन बनाना है, वो बच्चे से ट्रेन करना है, बढ़िया मॉडल फाइनल बनाना है। 25% पहले महीने में सेट हो जाएगा। अच्छा पहले महीने में ही है? हाँ जी पहले महीने में ये है। ठीक है, फिर ग्रुप प्रोजेक्ट हाँ वो बनेगा उसके बाद। ठीक है, उसमें क्या करना है, एक डोमेन करना है और एजेंट बिल्ड करने हैं, हाँ एक डोमेन स्पेसिफिक, और लाइक एमसीपी एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन इम्प्लीमेंट करनी है, टूल कॉलिंग रैग सब इम्प्लीमेंट करनी है। अच्छा, तगड़ा काम कर रहा है। हाँ, ये पूरी- मेरे रिज्यूमे में आएगा, अच्छी चीज़ है। पूरी पाइपलाइन बनानी है। बहुत तगड़ा है ये तो। ठीक है, फिर मिड सेमेस्टर एग्जाम 15%, ठीक है, जो भी होगा पढ़ाएगा। क्विज है 10%। ठीक है। टू अनाउंस, 2 पेज होंगे उसका। हाँ क्लास पार्टिसिपेशन हाँ ये बता दो। 1 घंटा कुछ नहीं है। एक इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, वो जो अपना जैसे नहीं होता ना हाँ हाँ LMW करके, हाँ हाँ, लर्निंग मिडिल वेयर करके। अच्छा ठीक है, उस पर कुछ एक्टिविटी करवाएंगे, उसकी पार्टिसिपेशन ये करेंगे। ठीक है। ठीक है, असाइनमेंट है 2, राइट पाइपलाइन ये कह रहा था बहुत कम वेटेज है लेकिन सीखने को अच्छा, मतलब अपने कंसेप्ट तुम्हारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, हो गया और क्या है? और क्या है? We quickly Short before pre-class class a short pre-class survey on NFW जो भी इनका इस पर प्लेटफॉर्म NMW पे वो साइन इन कैसे होगा? ये देंगे क्रेडेंस। अभी नहीं है ना किसी को भी? यानी क्लास लाइव एक्टिविटी होगी, क्लास में लैपटॉप वैपटॉप होने चाहिए। ठीक है, वीकली 3 सेंटेंस बिल्ड लॉग ऑन ए प्रोसेस जो भी है। अच्छा वो इंडिविजुअल उसके ऊपर 3 सेंटेंस है तो वो बता देंगे तो फिर क्या प्रोग्रेस करेंगे ऐसे? 3 सेंटेंस है, 10 आवर पर वीक कम से कम चाहिए इनको, अगर तुमको मतलब जिसमें प्रोजेक्ट इंक्लूडेड है। हाँ। और फिर क्या है, मुझे तो पढ़ना है। अच्छा अच्छा ये भी है इसमें ये था। हाँ वैसे ही। एविडेंस स्ट्रक्चर नहीं, वो ऐसे नहीं वाली सही है। फिर क्या है? बिफोर होगा हर एक लेक्चर के कुछ नहीं होगा ये सब तू क्या बनाएगा शुरू में एक क्लास में होगा, फिर वो अपना रहेगा कि हाँ कर कर सकते हैं कि 10%। अच्छा ये वैसे ही होंगे वो तो यार, मतलब ये 25% तो अपन यही से 20% तेरे फिक्स ही है, ऐसा मान ले तो ऐसे वो सबके फिक्स है ना, तेरे क्या फिक्स है? वही उसमें कुछ नहीं आगे तू कर सकता, मेन ये बकचोदिया है। लेकिन इसमें स्कोर कर सकते हैं थोड़ा। हाँ तो नीचे देखना उसमें लर्निंग Today's activity. In any chat model, find one failure, one refusal, and one surprise. चल जी को बंद कर, वन फेवरेट चल जी को। Before Thursday, read Rich Sutton, The Pattern Lesson. Read one objection. Thursday, here is the language modeling problem from n-grams to transformers. n-grams क्या था भाई? ये लेक्चर है, इसका टॉपिक है n-grams from n-grams to अरे एन ग्राम उसका ही है वो। NLP का ना, मुझे थोड़ी पता है क्या है। एन ग्राम को होता है कि कितने सेंटेंस, कितने जो टोकन है लेफ्ट राइट हमको देखने, अच्छा
उस कंटेक्स्ट बिल्ड करने के लिए ऐसा रहता है। कोर्स में दिक्कत तो नहीं रहेगी ना उसमें? क्या दिक्कत है, घंटा कोई दिक्कत नहीं, मतलब मेरे को आइडेंटिटी नहीं आता ना। अरे ये सिखा रहा है ना भाई। ठीक है, कुछ और दिखता है ना क्या है वो कुछ है नहीं। ऊपर की तरफ पीछे डालनी है, मेजर प्रोजेक्ट पीछे डाला है। बिल्ड अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज एजेंट एज अ टीम ऑफ 3 to 4 लैंग्वेज एजेंट। ठीक है भाई, चैटबॉट बनाना है क्या? ऐसे अच्छा, डोमेन में एजुकेशन, हेल्थ केयर, लॉ और डोमेन ऑफ योर चॉइस। हाँ तो हमने इंजीनियरिंग चूज कर लिया डोमेन में इंजीनियरिंग को बना ही दिया मैंने तो क्या बात कर रहे हो? और बस उसको सीखना है, बस दोबारा इम्प्लीमेंट करूँगा मैं, आपसे पता उसमें ये सब है, टीमेंट, ये डेटा सेट, प्लान, मॉडल, जो पिछला उसने बनाया था ना, वो तो ये है, वही फाइन ट्यून मॉडल, राइट, फुल एजेंट रिजर्वेशन रिपोर्ट, देख लेंगे, नहीं होगा तो ऐड करते हैं बनाना। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी थ्रू आउट। अच्छा, कंपोनेंट की आपको थ्रू आउट किसने क्या बनाया ये तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। कंपोनेंट ओनरशिप, कंट्रीब्यूशन लॉ और TAYY इमीडिएटली आफ्टर योर टीम प्रेजेंस। जो भी है, मतलब बांटना पड़ेगा, ऐसा है। टीम कितने की रखनी है? 3 या 4? ठीक है। करेंट 150 मिलियन टोकन, ट्रेनर टोकनाइजर, ये सब क्या है? टोकनाइजर ट्रेन करना है, टोकन डेटा पे फिर प्री ट्रेन करना है मॉडल, जो भी मॉडल। टोकनाइजर क्या कहता है भाई? टोकनाइजर कोई सेंटेंस को टोकन से तोड़ता है ना। प्री ट्रेन करना 2 मॉडल्स को। प्री ट्रेन करना मतलब उनकी एम्बेडिंग्स बनानी है। नहीं, वेट अपडेट, वेट ट्रेन करना है मॉडल को। अच्छा, वेटेड मैट्रिक्स वगैरह। ये थोड़ा समझना पड़ेगा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को। वीक 2 से 6 में चलेगा ये। वीक 6 मतलब कितने हो गए? 6 वीक यानी 42 डेज। पहले 4 वीक का है, 1 महीने का है ये। 6 लिखा है ना, 2 से 6। वो तो उसकी टाइम प्रोजेक्ट लिखा है वीक 6 से 16। तो उसके बाद वो ग्रुप प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। एजेंट रूप तेरा भाई, ये लैंग्वेज मॉडल ये सब पढ़ाया है क्या उसने? पढ़ाया है क्लास में? वो ये बच्चों की इंट्रोडक्शन है ये। ये सब कुछ नहीं पढ़ाया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन, ना मॉडल लाइफ साइकिल। कुछ नहीं पढ़ाया बच्चों की कहीं क्लास में, इंट्रोडक्शन ही था, कथा सी बात थी। डेप्थ ज्यादा बोल रहे हैं कोर्स में, ब्रेड से तो ज्यादा सिलेबस नहीं कवर करेगा। फंडामेंटल तो काम करेगा, तो चेंज नहीं होते पोर्शन। लर्निंग बाय बिल्डिंग, टाइमलेस ओवर एंड ट्रेनिंग। सेम है नहीं, हाँ, एक सब्जेक्ट यहाँ पे सही है भाई, लर्निंग बाय बिल्डिंग तो है ही। तो 2 सब्जेक्ट बच गए सेम के लिए, बस क्या बात। ये तो सही है, लर्निंग बाय बिल्डिंग। एक नंबर है भाई, सब्जेक्ट बहुत बढ़िया चूज करा है। तो वो डेटा एनालिसिस में से वो साल है, वो रेड्डी मुझे खा जाता है, उसे निकाल। क्या नाम है उसका? ठीक है, ठीक है, रेड्डी खा जाता। थ्योरी थ्योरी पढ़ा के साला बर्बाद कर देता। वो इतना बर्बाद करता देखो। पहले तो उसके 5 असाइनमेंट्स कर, वो चूते जैसे P2P वगैरह जैसे थे ना, वो मस्ती कर। उसके बाद में तो एंड सेम दे, उसमें कीवर्ड्स लिख, क्विज, मिडसेम, एंड 40% का एंड सेम खत्म कर देता हूँ देखो ये वाले अच्छे से। तो आशीष को भी बोला था ये ले ले एलए में, पर उसको डेटा एनालिटिक्स नहीं, क्योंकि बोलता मेरे को बुक ही करना है। ओके वो गांड में लेकर घूमना। 2 बुकें बच रहे थे हमारी, कंप्लीट कर देते, इसलिए मैंने रिस्क लिया, मैंने दोनों ओपन ले लिए। बुके बुके ये सब होते रहेंगे बाद में भाई, अपना रिज्यूमे पक्का करो। तेरे कितने बुकें बचते हैं? मुझे नहीं पता तो कहीं भी मेरे 4 बच रहे, मैं 4 कर लूँगा बाद में, तो किसे मिक्सर में। तेरा एक SME हो गया है, एक सेमेस्टर में ACN हो गया सिस्टम्स का, एक ये और कौन सा दिया सेमेस्टर तूने? डिस्ट्री भी हो गया ना, 3 बुकें, एक बुकें बचा, थ्योरी का लेना है, पहुंच ले ना, खत्म। कुछ नहीं, कुछ और लूँ। यार चल, तू दे रहा है उसमें से, ठीक है, हाँ, तो थोड़ा पहले दे दे उसको,
अपनी लिस्ट में। हाँ और अगर तू गांड मार ही रहा है तो ग्रेड बढ़िया थे फिर। ग्रेड तो ग्रेड बुरे बुरे नहीं देता है वो, बढ़िया नहीं देता है तो बुरे भी नहीं देता है तो ऐसे नहीं चाहिए, हम अपना दूसरा लेंगे, पोज नहीं लेना, कुछ भी ले लो। थ्योरी वैसे नहीं है देखो, हैं? बता दो कौन सा थ्योरी और कोई होगा तो एक ही थ्योरी छोड़ो कॉलेज में, उस सेमेस्टर तो एक ही ऑफर होता है शायद। क्या गद्दे पद्दे पढ़ना पड़े। समझता गद्दे पद्दे, नहीं गद्दांश पद्दांश, अच्छा पद्दांश मतलब पोएट्री, हाँ गद्दांश में से कौन सी होती है हाँ समझ गया मैं, पैराग्राफ स्टोरी टेलिंग वाली जो होती है, गद्दांश पद्दांश, तो गद्दे पद्दे बोल देती है हिंदी में तो बोल देगा। उस समय देख लेंगे सब्जेक्ट का कुछ नहीं, बट ये सब्जेक्ट तो बढ़िया है ना मैंने। एलए में एक नंबर सब्जेक्ट है, टीचर बढ़िया है बेचारा, शांति से पढ़ाता है, है चलो सर। चलो बढ़िया टीचर है ना, एक नंबर। वो सीनियर तो बोले तो बेकार टीचर है, कौन बोल रहा है? वो सीनियर अपने की सुना है हमने कि अच्छा नहीं है इतना। पढ़े तो वो भी मेरे से। एक वो हुआ है उसका, पिछली साल तो इंट्रोड्यूस किया हाँ। था, पिछले सेमेस्टर। तो बोलते मैंने मेरे दोस्त से सुना है, बोलते इतना अच्छा नहीं है। तो नहीं होगा, हर किसी का टेस्ट अलग होता है ना। नहीं ये तो मजा आता है, बच्चों को रीडिंग में बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, बच्चों को स्ट्रिक्ट मैडम मास्टर वगैरह नहीं होगा इनसे। पास जो स्टूडेंट को ऐसे ट्रीट करते हैं कि स्कूल में कर रहे हैं 4-5 में, ये नहीं है। वो बढ़िया था, उससे तो क्या नाम था, क्षितिज, एक नंबर एक मास्टर नंबर था भाई, बेस्ट था वो तो। क्षितिज हो गया। और ये अपना दास कितना बढ़िया टीचर है, दास तो अच्छा है यार, दास पढ़ाता भी बढ़िया है। दास से पढ़ के देखा ही नहीं मैंने अभी तक। वैसे उसका क्लास में जो प्रेजेंस है ना वो बढ़िया है दास की। तूने पढ़ा उसकी क्लास में? और ऐसे नहीं पढ़ रहे क्या? मैं तो उसकी क्लास सारे अटेंडेंस लगा के तू भी भागता था। तो मैं उसकी वैसे नहीं कह रहा, पर जितना हमने देखा है उसका हाँ। वो बढ़िया मास्टर। दास वो बन गया हमारा CSIS का कोर्स कोऑर्डिनेटर, HOD बन गया वो। अच्छा, हाँ बढ़िया, एक नंबर। दास का तो कोर्स तू बिना देखे लेता है, बस प्रोफेसर देख के लेता है। दास का नहीं छोड़ना। कुछ भी पढ़ा दे वो बड़ी क्वांटम पढ़ा दे भाई। बुके बोल रहा था ना तू, मैंने दृष्टि खोल ली तो टेंशन नहीं था। एक उठा रहा है देखो, बाकी तेरा सब सेट है पता है। ऑप्टिमाइजेशन मेथड है नरेश मुनवानी। हाँ, वो ले लूँगा, नरेश मनवानी बढ़िया थी। भाई वो कान आता तो है। मेहनत करके आता है, पढ़ाता है भाई क्लास में, ऐसी बात नहीं है। पढ़ के आता है, पढ़ाता है। हाँ, मुश्किल पेपर देता है। हाँ, ये इतनी सी कमी है उसमें, लेकिन ग्रेड बढ़िया दी, 8 दी है उसने। हाँ। तो पेपर कठिन देगा, सबके लिए देगा ना भाई। देख, कोई मास्टर पढ़ाए अच्छा, इंटरेक्शन बढ़िया करे बच्चों से, कितना भी कठिन पेपर देते वो सबके लिए, फिर वो बच्चे के ऊपर है। सही। लेकिन तुम जो पढ़ा नहीं रहे बच्चे को, तुम टाइम नहीं दे रहे समझने का, एक दिन पहले तुम लिस्ट दे रहे हो और पेपर पूछ रहे हो, ये क्या बात है? वो पढ़ाता है, उसमें से पूछता है भाई। मनवानी बढ़िया आदमी। हाँ। एक एडवांस एल्गोरिथम भी है हाँ, वो ले लें। और एक पॉइस है, 3 ऑफर। पॉइस नहीं लेंगे, पॉइस तो भटक गया दिल में से, मन से उतर गया पॉइस। ऑप्टिमाइजेशन मेथड ले लेना फिर, तो वो उसमें आता है AIML के, उसमें आता है वो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह। डन है फिर जो उठा ले 3 उठा। तेरे ऊपर कितने बचने हैं? मैंने काउंट नहीं करा कुछ भी, हो सकता है। एक ओपन खत्म होगा जब मैं तो वो सब्जेक्ट लेता हूँ, सब लेते हैं। मैं सर्च भी नहीं करता कौन से ऊपर हो रहे कौन से नहीं हो रहे। चले मैं तेको बता देता हूँ ना, अच्छे वाले। एक तू है, और भी बच्चे लेते देखते हैं। तू तो DA उठा लेता वरना हाँ, ठीक है DA में लेते DA में फंस जाता हूँ, LA में बढ़िया लेंगे। देखो मैंने बोला था अच्छा चेंज करवा नहीं, ये दे। बढ़िया करवाया था। तूने करवाया, प्रेडिक्ट तो नहीं जाता है, क्योंकि तूने DA तो मैंने सेलेक्ट कर लिया था, तेरा आया फोन बाद में, ये तभी चीज़ मेरा करना उसको LA में कर दिया, वरना नहीं जाता। अभी तो धीरे-धीरे LA में ले रहे हैं ना, BF छोड़ के, हाँ, बढ़िया रहे, बिजनेस फाइनेंस छोड़ के। बढ़िया रहे। चारों सब्जेक्ट सेम है उसके और तेरे, पता है? हाँ, दीदी और तेरे, एक IAS, एक LMA, एक डिस्ट्री, एक ACL। बढ़िया। बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये। मेरा बस रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिस्ट्री की जगह, हाँ, कोई वो भी वही पढ़ा है वॉइस वाला, और अशोक कुमार दास। डिस्ट्री का भी बढ़िया टीचर है अपना, कौन है? किशोर कोटा। कैसे वो
अच्छा पढ़ाता है, एक ही क्लास को ये वाली वैसे चले ग्रेड भी अच्छे देता है वो, 9-10 भी देता है। लिखनी से पढ़ी अरे वो उसका ही तो लेना था यार, किस्मत आ गई ना। पर वो लेता तो एलए में नहीं ले पाते, क्योंकि CSIS में ये प्रॉब्लम रहती है। मैंने चेंज बहुत सही करवा दिया, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, इसमें फ्रीडम रहती है। अब क्या है, ये क्या एरिया इलेक्टिव भी भरा है ना तूने इसको एलए को? हाँ शायद तूने बोला तो कोई बोला हाँ तो ये है। तो तेरे सब्जेक्ट्स में, हाँ तेरे पास ओपन इलेक्टिव कुछ नहीं बचा है, आईएएस ले चुका है ना तू? तेरा ओपन इलेक्टिव का कोटा खत्म। नेक्स्ट सेम तेरे को एक बुक ले लेना, ऑप्टिमाइजेशन, वो तेरे को कंपलसरी है, बाकी 3 तेरे को जो मर्जी उठा। ओपन नहीं उठा सकता, उस हल्का फुल्का फिर तो नहीं उठा सकता, चूंकि सब्जेक्ट नहीं उठा सकता मतलब तो बिजनेस फंडामेंटल उठा लिया, आईएएस उठा लिया। ऐसे सब्जेक्ट नहीं उठा रहा मैं जो पढ़े और वो काम ही नहीं है। उठा भी नहीं सकता फिर तो, अच्छा। ओपन का कोटा ही खत्म हो गया तेरा। एक आईएएस वाला मास्टर इतना बढ़िया कैसा है अगर वो? कुछ भी कर ला तू मुझे बता दे क्या करना है। उसका फर्स्ट टाइम है ना ये, वगैरह मैंने इमेज पे काम करा है। अच्छा। तो ये जो सेंसरी जो मतलब जो भी डेटा है ना तेरा हाँ। लूनर वाला, ये पहली बार आया मेरे को। लूनर हाँ, इसमें क्या है? चंद्रयान 3 का डेटा है, अच्छा। वो जो प्लाज्मा है ना हाँ। उसको रीडिंग करी उसकी प्लाज्मा की, तो उससे कुछ प्रेडिक्शन करनी है। अच्छा। तो उसका एमएल मॉडल ट्रेन तो करना है। इनपुट टेक्स्ट के फॉर्म में? वो तो सीएसवी फाइल रहती है ना, अच्छा। वो हाँ डेटा की रीडिंग्स रहती है, अच्छा। उसकी वैल्यू रीडिंग की वैल्यू के बेस पे कुछ प्रेडिक्शन करनी, क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम। इजी है, सेमेस्टर ही इजी है तुमका। पर जो मैंने बनवाया था उसका एक दिक्कत आ रही है उसमें। क्या? मैंने क्लाउड से बनवा लिया वो, हाँ। तो मैंने वो ट्रेन करके देखा, हाँ। रिजल्ट ही जीरो आया सब कुछ। अब मुझे पढ़ के देखना पड़ेगा क्या हाँ गलती हो रही कैसे बन रहा है, तो मैं तो बिना देखे चला रहा था। एलएमएम भी देखना पड़ेगा, पर ठीक है। चलो आज जाऊंगा क्लास, आज पहली क्लास है मेरी, रिसर्च इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। या तो कनन श्रीनाथन आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड की है अपनी, हमारी कितने बजे है? जितने बजे तुम्हारी डिस्ट्री उतने बजे हमारी आ रही है इससे, 2 बजे। तो 2 बजे ना। हाँ। लोकेशन नहीं बताते, 105 में है बस। थर्सडे को ECN, ये तो सेम है अपना, मंडे थर्सडे का। ये इसे ट्यूसडे और क्या नाम से अपना फ्राइडे को अलग रहेगा, टाइम सेम है, क्लास अलग। खाना कहाँ है आज तेरा? वही है। पलाश में नहीं खा रहा? कैसा है ना यार वैसे? बन गया अपने हाँ नीचे। नीचे चल गया है वो हाँ चल रहा है, बढ़िया खाना है, तो बोल रहा है। तेरे को कैसा लगा? मैंने नहीं किया चल रहा है आज खाना? वैसे तो कष्ट हो गया ना। जीप कहाँ नहीं जाता है क्या? शायद वो और देखूंगा किसी दिन जिस दिन का यहाँ चूतिया हो ना इतना नीचे के नीचे फालतू में दूर जा रहा है बारिश में। दूर तक है फूड खाना खाने जाते हैं, एक नंबर खाना मिलता है वहाँ पे। था कहीं के ऊपर का सब। और बस आधा सिंपल खाना ना, कोई खाना और चाट पकौड़ा थोड़ी ना, और रोटी सब्जी है अपनी। तू नहा लिया है क्या? ये साला किसी का है वो दे दिया, कहाँ नहाने जा रहा है? हाँ यार जाता हूँ। गर्म पानी आता है इधर? एक चलता है कि या तो गर्म हुआ या ठंडा। गर्म होता है वहाँ पर, वो जो सामने वाली वो होगी ना तेरे, हाँ हाँ। क्या वो नल जैसे बकुल में थे। हाँ सामने वाली जस्ट हाँ हाँ। उसमें शायद मिलता है। अच्छा तूने ट्राई नहीं किया? करा है मैंने, इसमें गर्म देख, इसमें गर्म पानी उसमें से बदला। मेरा तो उस साइड वाला बाथरूम है, दोनों ही में कोई ऑलमोस्ट इक्वल ही है। उधर जाओ इधर आओ। उधर ही जा अपनी लाइन में। रूम सेट है यार, हैं? मस्त है। रूम एक नंबर है भाई, तेरा भी मेरा भी रूम एक नंबर एक है। नंबर रूम है यार। फर्स्ट फ्लोर पे व्यू भी अच्छा है। व्यू से हरियाली है, ठीक है। मेरे को वो पसंद नहीं है यार, पेड़ पेड़ कौन से पेड़? वो उस साइड है ना, ई ब्लॉक साइड। उसको छोड़ लो, अपने पेड़ बढ़िया है। अपने तो मुझे अच्छे लगे, हरे हरे हाँ, हरियाली वाले। नीम के हैं, आम के पेड़ हैं, फल भी लगते हैं यहाँ पे। वो देखे तूने वहाँ लंबे लंबे वाले पेड़? वो ऐसा लगता है हालांकि किसी जंगल वाली भूत वाली फिल्म आती है। हाँ मैं वही बोल रहा था, तो वो वो साले जैसे यहाँ से भूत ही लेकर
ये द्विवेदी, विपिन और गौरव तीनों वही है। गौरव फर्स्ट फ्लोर पे 138, हाँ, द्विवेदी और विपिन ने 14 करा लिया। विपिन ने थर्ड फ्लोर पे मिला था, हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दिया पैर का, 14 मिल गया उसको, और 17 है द्विवेदी का। हाँ। वॉशिंग मशीन के पास में कभी जाना हो कपड़े धोने तो पटक दो। मैं हाथ से धोता हूँ, मुझे वॉशिंग मशीन से भरोसा उठ गया मेरा, तो सकते होता हूँ मेरा। देख करने के बड़े दो एक वो वहाँ है, तो फ्री वाली भी होगी। कुछ भी हो, मुझे फ्री में धोना मेरा अपना है। अब ये रख दिए इसमें, हाँ खाना वाना खा के आऊँगा, 10 मिनट का काम रहता है सिर्फ, हाँ, 10 वो मिनट। मैं बैंगलोर में ऐसे ही होता था तेरी टेक्निक से। हाँ। गला के रख दिए, 2-3 घंटे गला दो हाँ 10 मिनट का काम रहता और है, अच्छे धुल जाते हैं। बहुत एकदम। साबुन कौन सा ले रहा है, लिक्विड या वो पाउडर वाला? पाउडर अच्छा। वो है एरियल, बढ़िया एक नंबर देखती है। काम तो सेट चल रहा है, सब्जेक्ट तो सही नहीं है, बस डीएस से हो जाएगा, टाइम तो है। डीएस ही कर रहा हूँ, एक सब एक क्वेश्चन और देखता हूँ। कितने बजे? अभी तो बज रहे हैं 11:30। 12:30 तक एक क्वेश्चन हो जाएगा, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आज। मैं भी डीएस से शुरू कर रहा हूँ। कर दे, टाइम नहीं है, सही है यार। ठीक है ना, टाइम है नहीं, ये चूतियापंतियों में निकल गया बहुत टाइम। अरे मेरा ये चाहिए यार, मेरे को क्या? वो कहाँ रखा है वो लैपटॉप स्टैंड। तुम्हारे पास मुझे क्या बोलो, देख तू ले तो नहीं गया, नहीं या फिर वो ले गया तेरा द्विवेदी? प्रेस को मत लेके जाइयो, प्रेस को लेके जाइयो जब तुझे प्रेस करनी हो। प्रेस मेरे पास एक और नया है, वो तो तुमको दे दूंगा। क्यों, ये 10 का क्या करेगा? हाँ इतनी प्रेस का क्या करेगा? फिर नहीं लाया। वाह वाह वाह, क्या बात। हाँ सही में, बैंगलोर में मैंने खरीदी थी, हाँ। वहाँ गया था तो ले आया। अब 2-2 प्रेस का क्या करूँगा मैं, ले लूँगा। ना तू ही रखना उसको, मैं तो मेरे लिए बढ़िया है। देखो ये वाली देख, बजाज वाली। तो वो क्या लोकल है क्या? लोकल नहीं है, वो दूसरी कंपनी है। ये वाली थोड़ी कड़क है, भारी है मतलब। अच्छा वो हल्दी है। हाँ देख ले अपना सामान कहाँ है। वही देख रहा हूँ। और पता है ऐसे करेगा तो भी लग जाएगा वो। ऐसे ही लगता है, वैसे तो खुल ही जाता है, इसका कोई फायदा थोड़ी है। ये तो फालतू लगा ये दिया। फालतू लगवाया मैंने। अपन पहले उसको बंद ही नहीं कर रहे थे, अपन रबर बैंड लगा रहे थे। एक वो लगाना पड़ेगा मुझे, एक। भाई 70 दिखाया तूने। अरे मैं क्या रंगा, मैं क्या करता है, कहाँ है ना? ये रखा। अरे मैंने बाबू, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। इसको बैग भी दे रही है, इसको देख के इसको देख कैसा हो गया, उसको कपड़े से पहले पूछना पड़ेगा। अरे यार ये मेरे को लग रहा है नीचे रखा है यार। ये तो शू स्टैंड है, इसको ले जा। हाँ इसको ले जाता हूँ ना, आज सब ले जाऊँगा तो क्लास हो जाए एक बार, उसके बाद शाम को ये काम ये काम कीजिए, ये बाकी तो और एक इसको भी लगाऊंगा रूम में। हाँ, इसको मिल जाते हैं। ये तो फिर महल बनाना पड़ता है। स्टूल भी है, छोटा बैग भी रखा है, बहुत सारा सामान रखा है। नौकरी की तैयारी करता हूँ जाके। चलो भाई नीचे वो लिखवा के भी आना है यार, इन सब का क्या? पर्दे के स्टैंड का लिखवाना है, एक बल्ब का लिखवाना है। हम्म, टेबल तो ठीक है यार, वैसे मेरा टेबल कुर्सी तो ठीक है। कुर्सी सही है, तेरी कुर्सी। मेरी वाली मुझे लग रहा था डगमग हो रही है, पर इतनी भी नहीं हो रही है। अब मैं उसको करूँ ही जबरदस्ती तो हो रही है, ऐसे तो नहीं हो रही है। कुर्सी टेबल में क्या करते? टेबल में सही है। टेबल मेरे वाले में वो थोड़ा यहाँ से जो है ना, ये ऊपर है, उखड़ा हुआ है थोड़ा। अरे उसको जिस तरफ तू माउस रखे उससे अपोजिट में रख लियो उससे। या उसको टक टक हैमर से कोई ठोक भी देगा ना तो अंदर हो जाएगा। हाँ, तो जब कारपेंटर आए कुछ लगा ना, वो कर जाएगा। वो दो कारपेंटर से टेबल में हाँ। ठोकने का, वो उठ गया, वो बारिश में लकड़ी फूट जाती है ना। टूल ही गया वो, ऐसे रुकने से नहीं होगा, उसमें एक चोगा लगेगा, क्या लगेगा? पिन, अच्छा वो ठोकनी पड़ेगी। कर देगा वो तो, कारपेंटर आके बदलने की जरूरत नहीं है, वो सही सही कर देगा बस। इसको लेके कोई कुछ बोला नहीं, कोई रिकॉर्ड कोई एंट्री आज तक कोई नहीं कुछ सेट है ये तो।
एंड में देखेंगे, लड़ाई एंड में ही करेंगे, और अगर कुछ सीन बना वो ठीक है, चलो ले लो फाइन होगी, हमें दूंगा ना अपना। जब अपन इंटरव्यू में इंटरव्यू थी कुछ नहीं था। अभी तू रखे रख, मेरे को नहीं चाहिए खेलने चलिए कोई दिक्कत मेरे को लगी था ओढ़ने का लेना है मुझे मुझसे नहीं। क्या ओढ़ने का सामान मेरा कहाँ है? क्लास के बाद लेता हूँ, वो ढूंढना पड़ेगा अच्छा ठीक है ढूंढने को बस कर दो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर क्लब में। क्लास के बाद मिलते हैं हाँ हाँ All right, it's accepted, guys, right? So I think it's very good for us, and hmm. So let's do next question, some question here.